Yeah, so now we can start our meeting. So any questions? हेलो सर। हाँ जी, हेलो राहुल जी बोलिए। सर स्यूडो डिस्क बल्ज यानी हेट्रोफेना है ना सर? देखिए ऐसे तो ये हेट्रोफेनामेना है, बट हमें ये समझना होता है कि एक्चुअल डिस्क जो बल्ज होता है वो जो बाहर के जो एनुलर डिस्क होता है उसमें डिहाइड्रेशन डीजनरेशन की वजह से होता है। सो ये एक होमो प्रोसेस है, बट उसमें ये हेट्रोफेनामेनन है। सो वो हमें कंडीशन देखना होगा किस कंडीशन में हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करके फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हेट्रोसिडेट करना है या होमोसिडेट करना है। अगर ठीक एक्यूट है सर। कंडीशन एक यंग एज में है देन हेलो डेफिनेटली वी कैन सर। सिडेट हेट्रो। और सर समझ में आया नहीं समझो तो होमो एज अ डिसीज रेंट रख करके हेट्रोसिडेशन कर सकते हैं ना हाँ उसका? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, संजय जी बोलिए। पेन है, तो हम हेट्रोसिडेशन एक दो तीन टाइम करके बाद में होमोसिडेशन कर सकते हैं इसमें फर्स्ट नहीं, टर्म। नहीं बेटर है फिर होमो एज ए डिजीज रेंट करके हेट्रोसिडेट करिए अगर क्रॉनिक है तो। मैंने ओके ओके आप कहना ओके चाहते सर। हैं, आप पेन को कम करना चाहते हैं, राइट? हाँ, फर्स्ट हाँ, पेन हाँ, पेन कम करना। हाँ, हाँ, तो उसमें पेन को और डिजीज उसके को, बाद हाँ, तो पेन को आप रेंट कर सकते हैं एज ए होमो, एंड देन उसमें हेट्रोसिडेट कर सकते ओके सर, ओके सर। हैं। बबीता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं सबको सर म्यूट कर रहा हूँ, जिनको क्वेश्चन पूछना है वही अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, बोलिए राहुल जी। सर जैसे जॉइंट्स में अपन कार्टिलेज क्रिएशन के लिए क्रिएशन ऑर्डर देते हैं ना, हाँ जी। तो वैसा L4 L5 में किस कंडीशन में दे सकते हैं? नहीं, वहाँ क्रिएशन ऑर्डर नहीं कर सकते। क्रिएशन ऑर्डर जहाँ करना है जहाँ हमें कुछ क्रिएट करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए पूजा जी। हेलो। हाँ सर। सर डिस्क बल्ब जो होता है उसमें तो डिस्क रेंट करना है एज न्यूट्रो या हेट्रो? प्रोफेसर ने न्यूट्रो लिया था, उसे न्यूट्रो लिया था। तो सर फिर उसमें हेट्रोसिडेशन करेंगे ना हाँ, उसमें हेट्रोसिडेट कर सकते हैं। बल्ज में? कर सकते हैं, बट अगेन उसमें भी जो हेट्रो कंडीशन जो बल्ज बाहर आता है ना, उसमें क्या होता है स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन जस्ट अ मिनट। हाँ। सर हाँ जी, हाँ जी, सर डाइजेस्टिव पैनक्रियास के लिए मेरिडियन नहीं है ना सर? डायरेक्ट ऑर्गन पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना उस पर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है उसका सर, मेरे उसका मेरेडियन भी होगा। नहीं नहीं है आपने न्यूट, वो ड्यूडेनम आ जाता है वहाँ, हाँ। तो मेरिडियन कहाँ पे आ जाएगा? उसके लिए डायरेक्ट जो स्प्लीन मेरेडियन है ना, उसी को यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हम्म, एक मिनट। यस। क्या होता है ना, जो डिस्क का स्ट्रक्चर है ना, ये एन्युलर डिस्क बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, राइट? सो ये जो डिस्क जो बल्ज होता है वो यहाँ ब्रेक होता है, जिसके कारण से ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ आता है, राइट?
सो इसमें ये हेट्रोफेनोमेनन ब्रेक आता है एंड देन उसके कारण से ये बाहर आ रहा है, राइट। सो ये जो ब्रेक हो रहा है ना, वो इसलिए ब्रेक हो रहा है कि इसमें डीजनरेशन, ड्राइनेस आ रही है, डिहाइड्रेशन एंड डीजन, तो इसलिए एक्चुअली इससे इसमें हेट्रोफेनोमेनन आ रहा है, बट ये एक्यूट कंडीशन हो सकता है। बट ये डीजनरेशन जो हो रहा है ना इस डिस्क में लास्ट लेयर में, दिस डीजनरेशन इज होमोफेनोमेना, वो एक दिन में नहीं आ रहा है, राइट। सो डायरेक्ट हेट्रोसिलेट करने से बेटर है कि आप डिजीज को एज ए होमो रेंट करके इसमें हेट्रोसिलेट करें। और सर साइटिका में तो लंबर में ही प्रॉब्लम होती है ना, लंबर जनरली L5 S1। हाँ, जो साइटिका एक्चुअली साइटिक नर्व है, वो उसके ऊपर ये जो बल्ज होता है वो प्रेशर देता है, राइट। तो जनरली आपको L4 L5 या फिर L5 S1 में प्रॉब्लम आता है इन जनरल। तो जो हमें लेना होता है जैसे वर्टिब्रा एंड डिस्क बिलो इट। जैसे अगर ये L4 है तो L4 प्लस वर्टिब्रा, L4 वर्टिब्रा एंड डिस्क बिलो इट, वो एक में लेते हैं। सो हमें L4 पे काम करना है। अगर L4 L5 में प्रॉब्लम है तो हमें L4 पे काम करना है, L5 S1 में प्रॉब्लम है तो L5 पे काम करना है। तो अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा? फिर जनरल नंबर पे काम कर लें तो चलेगा? हाँ, या फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट प्रेस करके आप चेक, इंसर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में या स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में, थ्रू दैट वी कैन चेक। सर जिनके पास अगर रिपोर्ट नहीं है, उन्हीं के लिए पूजा जी बोल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। बट साइटिका के लिए इतना ही सफिशिएंट है ना कि उसमें बस होमोसिडेशन? हाँ 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 हाँ। तो लेग वगैरह पे कुछ मतलब नहीं, क्या होता है साइटिका में जनरली अगर आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करने के बाद कौन से मेरिडियन में पेन है, अगर जीबी में है या यूबी में है तो उस मेरिडियन में काम करेंगे। उससे भी अगर रिजल्ट आ रहा है और डीप जाना है तो हम पर्टिकुलर वर्टिब्रा में कर सकते हैं। पर्टिकुलर वर्टिब्रा में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम एज ए होल नंबर को ले सकते हैं। एंड अगर बहुत क्रॉनिक है, साथ में डाइजेस्टिव इश्यूज है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम कोर मेरिडियन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीपल अप्रोचेस हैं और वन बाय वन वी कैन ऐड। Start with constitution, then we can add next treatment. एक्चुअली जनरली जल्दी इफेक्ट नहीं आता ये पेन वालों में। कोई पेन वाले जो पेशेंट्स होते हैं कुछ चेंज ही नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन लगाने से समझ में नहीं आता है उनको कि पेन कम हुआ नहीं हुआ। नहीं, अगर बहुत पेशेंट्स में हो रहा है। नहीं, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग है। कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल परसों फ्राइडे को मेरे पास एक पेशेंट आई थी हमारे क्लिनिक में इन सीवियर पेन। सीवियर मीन्स फ्रॉम लास्ट 1.5 month सी इज इन टेरिबल पेन, काफ़ी डॉक्टर को दिखलाने के बाद। एंड वो जब क्लिनिक पे बैठी तो सी वाज अनेबल टू सिट, मीन्स सीवियर मीन्स जस्ट लाइक ए करंट की तरह उनको बार बार आ रहा है, वो बैठ ही नहीं पा रही थी, राइट। तो एंड मैंने सिर्फ एक सिटिंग किया। मैंने उनको बोला कि आई विल वेट फॉर 2 सिटिंग बिकॉज पेन वाज जस्ट लाइक ए कैंसर पेन में, ओके। पेशेंट वाज इन सच ए टेरिबल पेन एंड सारे डॉक्टर देख चुके थे, पेन क्लियर, नथिंग इज वर्किंग, MRI was also normal, and the next was PET scan. So I told them कि I will wait for 2 sitting consecutive sittings में दूंगा. If we will not get the result, then we will go for PET scan to find whether there is any tumor or cancer thing or not. But in the first sitting, patient को उसके बाद से पेन किलर नहीं लेना पड़ा. Then on Saturday she came, she was absolutely fine. So I did on unit constitution because pain was severe. So just unit constitution and unit constitution and fear sedation, and in the back I went in the back and sedate homo. Just these 3 treatment I did. So unit coldness sedation, excessive. So unit. Yes. तो सर जो सीवियर पेन वाले हैं ये जनरली शायद यूनिट होगा, इसलिए इंडिविजुअल में चेंज नहीं आता है। ये नहीं आ रहा ना, इसलिए बोला अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है देन थिंक ऑफ योर ट्रीटमेंट।
थिंक ऑफ इट. हाँ. सो मैं बता रहा हूँ तो यूनिट. अगर यूनिट हाँ. तो अगर यूनिट एक्सेस है तो फिर इंडिविजुअल काम नहीं करेगा बिल्कुल नहीं कोई नहीं भी चीज में. नहीं करेगा. You will not get the result. If see, we have to decide based on the dominant energy. If dominant energy is unit coldness, then we have to work on unit constitution. If dominant energy is R coldness, then we have to work on R coldness, our individual constitution. So we have to decide based on the energy, ना. इसलिए result नहीं आ रहा, that means we have to look after our treatment. सर यूनिट में सिर्फ चक्रा किया कि मेरिडियन भी ऐड किया? Only chakra. This was the constitution. This was the constitution of the patient. Isolate coldness से start किया, excessive condition था, coldness sedation, hotness tonification, dryness sedation. That's it. सर जी. सर एक्सेस चलने वॉकिंग करने के कारण जो तकलीफ आ जाती है पाँव में, हाँ उस जी. टाइम क्या करना? Walking. मुझे नस सिर पे नस चढ़ जाती है. एक्चुअली साइटी का पेशेंट है, लेकिन एग्जॉर्शन होने के कारण 2 दिन से बहुत ज्यादा पेन हो गया है. So this is again our coldness. This is our coldness. So we can see it our coldness. किसी भी तरह का एग्जॉर्शन हुआ तो आहा कोल्डनेस के बारे में. हाँ. जैसे बहुत सारे पेशेंट को मेरे पास आते हैं, जो मेरे पेशेंट के पास मैग्नेट है एंड ऑल, अगर उनका कॉल आया कि हम टायर्ड हैं, बॉडी में होल बॉडी में पेन हो रहा है, तो आई जस्ट एडवाइस यूवी सेडेशन और कभी कभी विथ यूवी सेडेशन लीवर टोनिफिकेशन. दैट्स इट. इट हेल्प्स देम. अगर वो मेरे पास आते हैं, देन आई sedate our coldness from their constitution. And sir, for headache also UV sedation will help. Headache? In case of headache, we have to find the area of headache, in which whether pain is in the back side or temporal side or in the front side like that, or in the center. So based on location, we have to understand. When sir headache is in all over, sir, head. All over head, then we have to find the reason, how long. But otherwise, if it is an acute condition, then we can think of our coldness sedation. So one patient having headache, and the headache was so severe, उनका eyes headache की वजह से उनका eyes एकदम बंद हो जाता है सर. तो eyes वो चाह के भी खोल नहीं, जैसे लगता है किसी ने कोई नशा करवा दिया. उनका eyes headache की वजह से वो एकदम बंद हो जाता है. Then see, if with eyes we have to understand that from the side, from the side there is GB and eye connected with liver, and sometimes this UV meridian starts from here. So it can be because, so we have to find the symptoms. It can be UV or it can be GB. It can be emotional factor, no sir? Yeah, that's why I'm telling you, we need to find the history. Just like we cannot say that they headache, then we have to do this treatment. Yes. So we can't say. Treatment is going on, sir. But this kind of symptoms sometimes happen. So then what to do? Then what is the constitution? Always treatment will be always individual. You cannot say for headache this will be the treatment. Then it will be just like allopathy. Okay. Sir, exhaustion के लिए Sorry. Sir, exhaustion के लिए UV meridian क्यों लिए? UV नहीं लिया मैंने, R coldness लिया. It is R coldness, and then as per the constitution, whether it is UV or GB, we have to see. नहीं, जैसे आपने कहा कि पेशेंट आते हैं तो कोई मेरे स्टूडेंट बताते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि जनरली यूबी बताते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है, अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो, अगर नहीं होता है देन जीबी और यूबी, आर कोल्डनेस. ओके, थैंक यू. इट्स नॉट ऑलवेज यूबी. सर अगर L3 L4 में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन से विंड का अगर स्टडी किया जाए तो उससे आराम मिलता है. क्या बोले अवस्थी जी? कॉन्स्टिट्यूशन से अगर विंड स्टडी किया जाए ना, विंड और कोल्डनेस, तो उसमें हेडेक में बहुत रिलीफ मिलता है. ओके. हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन से राइट. माइग्रेन वाले आए थे तो उनको बड़ा ठीक हो गया. हाँ, बिल्कुल. So can you repeat what he said? There was a little break in the voice. Yeah. He said that coldness and wind together, if we sedate from the constitution, then in headache we got good results. So he's involving GB and UB both. So in L3 L4 is a problem. So we'll work on L3, no? Yes. Vertebra. And sir, cartilage in triregional, cartilage is homo or hetero? It is homo.
And synovial fluid? See, as per the triagin, we have to find the division. Then see, if you go into the vertebra, na, again vertebra itself is having, see, as per the triagin, if you go, then again there is muscles, there is arteries, there is nerves. So as per the triagin, we have to go into the communication. No, sir, this is not in context of that. Generally, supposingly knee, if knee is a problem, then if we have to increase the cartilage, so cartilage is homo. Yes, yes. No. As per the triagin, if you go, then the in triagin division, we took bone and cartilage together as a homo. Bone as a homo, and in that the bone with cartilage. So bone is homo and cartilage is hetero. That is another division of joint. As for triagin, it is totally different. No, supposingly, sir, knee joint is a problem. Knee is a problem. Yes, yes. So we go to all joints, and then from there we go to hetero, and then we do it. Yes, so yes. After reaching then joint, we reach there. After reaching the knee, we can directly with consciousness go to cartilage. No. Go to the bone and cartilage together. So bone as homo. Bone as homo, and in that again cartilage is hetero. Cartilage is hetero in that. Yes, yes. And if a synovial fluid is a problem, then synovial fluid is? Then synovial fluid we can take as a communication, we can take, because it is in communicating, or again we can as a capsule. In capsule it is hetero. In that again there will be synovial fluid. So this but what is synovial fluid? Neutro? No, neutro will be your muscles and ligament. Correct. Muscles and ligament. Okay, and hetero is cartilage. So will it be homo? No. Hetero is not cartilage. Bone with cartilage is hetero. Exactly. Bone is homo. Bone is homo. In that hetero is cartilage. No. Bone and cartilage together is homo, under one. Bone we can say under homo. Okay. No, supposingly reaching the knee joint, after reaching the knee joint through structural system, then what do you do then? Then take bone and cartilage together, bone as homo, you can say. The bone innermost structure is bone, and over that there is a cartilage. Correct. Okay, so that bone we will take as homo, and if bone and cartilage is just above the bone. So you mean homo as bone and cartilage? Yes. So it is not that homo ka homo. We don't have to do that. No, homo ka, then to reach the cartilage we have to rent hetero of homo. That's what I said. So once I reach the structural system, if I reach the knee joint. Knee joint is hetero. Yes. Hetero finger is your knee joint. Correct. Then this homo joint is bone and cartilage together. And in that hetero is cartilage. Hetero is cartilage. That's what I also said. Yes. So hetero finger will open. Okay. And sir, had it been a problem of synovial fluid, then we have to work on the covering or communication. Covering we will take as a whole. Covering will be hetero. Okay, then in the covering there is the covering is the synovial membrane, and in that synovial fluid. So how will we reach that? So synovial fluid, hetero will be your covering. In that covering again we have to classify. That outer covering will be hetero, and the inner synovial covering will be homo, and that fluid we can take as neutro, because that fluid will help into the lubrication and all. Correct. Okay. But the main problem is with cartilage. So when there is cracking sound, there will be problem with cartilage or synovial fluid? See, again I'm telling you, the crackling sound in the morning also I told you is because of excessive wind in your gas vata in your body. So we need to generally work on digestive system, it will go away. But if it is okay, sir, but if it is related with the osteoarthritis, then it is dryness, we can say, dryness energy. So it is homo. Less synovial fluid, sir. It means. We can say, but generally synovial fluid, the synovial fluid decrease not in acute condition, very later stage. Okay. So in osteoarthritis, old age, osteoarthritis is a degenerative disease. If you go into the pathology, it is an osteoarthritis is a degenerative disease, degeneration of the cartilage.
Doctor used to say that there is problem with the synovial fluid. So then Yes, sir, synovial fluid will doctors not be go. a problem in this, in osteoarthritis. No, osteoarthritis. What is osteoarthritis? Osteoarthritis is a degeneration. Degeneration, Degeneration correct. of what? Of bones, no? Of Yes, that, cartilage. yes. But Cartilage. sir, then what will be a problem in synovial fluid then? If So synovial fluid, don't go with the doctors. Doctors used to say to a patient that synovial fluid, आपका fluid सूख गया and all. ha. So Yes, it is sir. Yes, sir. sir. The same thing. okay. So Hello, it is. sir. हाँ जी. Degenerative means bone changes नहीं होता. हाँ, बोन Only cartilage में changes होगा. पहले कार्टिलेज में होगा. जब कार्टिलेज Bone कार्टिलेज उसका पूरा डिजेनरेट हो जाएगा, then it will reach to the bone, ना? Yes. Okay. So our job is to recreate the cartilage. Sir, in this case, we can go through Sujok 6 key, no, sir? Because there is the divisions are very clear. Synovial is under humidity. Yes, yes. 6 key division is very clear, very clear. Because in triogen we have to divide in 4. Then it is a little bit difficult to divide all these structure in 4. But here 6 key is very clear. We have 6 divisions. Yeah, in 6 key we have everything, cartilage also, synovial fluid also. But if we have to do through trioregion, that's why I wanted to know how. Triogen division is little bit complicated. We have to understand whole structure of the joint. Okay. Sir, if we go through the 6 key and reach this cartilage, and there we can put that creative cycle of triogen. No, if you go through 6 key, then better to do with 6 key, because see, if you are going through triogen, then very easily we can combine triogen with the 6 key. You will reach to the joint, and in each joint there is 6 key, 8 key, or triogen forces. So we can very easily do. But if you are going through 6 key through meridian renting, then it is very difficult. There is also triogen point, but it is very difficult to incorporate 6 key and then triogen. So if we combine that way, supposingly if we reach the knee joint, supposingly synovial is a problem, then after reaching that joint, there we can do 8 key or 6 key, no? Because synovial fluid is humidity. Yeah, there we can do. So what it will be then? Reaching that joint, supposingly we reach the knee joint and structurally, and then there directly we can increase the humidity as synovial fluid, or we have to do something else for that? No, if synovial fluid is your humidity, in that if there is some problem, then as per the problem we can do. Matlab directly on that knee joint can be done, no? Yes. Okay. So to increase humidity, we should enter humidity and tone from wind heat, like that. Yeah. You see, like that we can do. Okay. Or else before that only we can humidity is deficient because of wind excess. So we read the joint and do humidity tonification in wind sedation. In joint? GB, rent humidity, will go to the knees. No. Knee joint. No. Then again. No. In this way we cannot do the renting. Okay. In this way we cannot do the renting. I think you've forgotten the renting of knee joint. You have to rebrush everything. Nice, sir. How do? Okay. I have to explain many things. How can we go to the knee joint? Knee joint is controlled by which energy? Wind energy. Wind energy. Wind energy. Wind, yeah. Not wind, wind. Wind, okay. Sir, right knee and left knee would be different, no, sir? That is dry. Yes. That will be heat. And both when we consider, then that will be under dryness, right? Yes. You people have learned recently. Dryness, yeah. This side. Yeah. So right knee is different. Left knee is different. Yeah. I remember. So how all knee joint, we have to find the classification of all knee joints. So there are 2 divisions: right, left, up, and down. Yeah. Okay? So we need right knee is always dryness. Right knee is always dryness. Good.
Okay, so 6 key classification is little bit easy for joint, but triagen classification is a little bit tough because we have to classify the whole structure. Next time I will try to find the knee. If you do you know the structure of the knee joint? So there is bone inside, then there is a cartilage over the bone, and then there is a whole covering, and the covering covering, there is outer covering, then there is the inner covering, like that. So lot of structure, then there is arteries, muscles, ligament, lot of things are there, right? So we can work. So and Sir, 6 key also we can do creation order. Means creation order means it is the dryness and coldness, and we can 25 wind, heat and hotness to for regeneration of the cartilage through the 6 key also. हाँ जी बोलिए सर हर एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है क्या? विंड, हीट और कोल्डनेस की सबकी? हाँ जी निरस तो अपन एक ही लगाते हैं, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की नहीं लगाते हैं. See, body is very intelligent, okay, and we cannot create that frequency, okay. So there are certain point which can help in regulating these energies, okay. So body itself will do. See, who is the healer? Body is the healer. Body will heal. We are just supporting the body. हम लोग सिर्फ body को support कर रहे हैं. Body nature से वो energy खुद ले लेगा. हमारा just intention है, we are stimulating, we are helping the body. Then rest of the thing body will do itself. तो विंड का फ्रीक्वेंसी कम होती है और कोल्डनेस की सबसे ज्यादा, इस तरह से है क्या सर? किसको याद है? Go by Vibji or na colors. क्या सर? That gradation only. Frequency. What is frequency and what is wavelength? Frequency is high, then wavelength is less. Less, sir. Wavelength is less. So if wavelength is more, say Frequency will be. This is the wavelength. Okay, this is one wave. Okay, so here the wavelength is. So less frequency, wavelength more. Yes. And more frequency. It's opposite. It's opposite. Okay. Yes, it's homophore, sir. More frequency is homophore. Yes, more frequency is homophore. Why more frequency is homophore? Because so it is closer, sir. Yeah. It is closer, sir. Yes. If frequency is high, then length is shorter, then it's closer. So length is shorter, then it is closer. So close means homophenomena. Far means heterophenomena. Okay. So for wind, heat and hotness, if this is wind, then heat will be, sorry. Let me draw. See, if you go by wind, then if heat, like this. If you go by hotness, okay. So if this is wind, this is heat, this is hotness. If you come to homo, then it will become, frequency will go high. Okay, frequency will go high and wavelength will be shorter. If this is humidity, then dryness will be frequencies go high like this. Coldness will be very close, more high, very close. So like that, but we don't know exact frequency and wavelength of each energy, or we can find. This is not the research, and the professor has not given an idea, but for triagen point of view, he has given that 1 Hz is hetero, 1 Hz, then 5 Hz, and then 20 Hz. This is there in the light device. So 1 Hz is hetero. ये वाला ना मिनी मिकी. Please mute.
Please try to. And this is HOMO. So more frequency, less wavelength. So exact measurement तो हमारे पास नहीं है, but for trigen we have, but for 6 key we don't have. But from these waves, Dr. Vayata used to explain all these things. This is true when we are using colors only, no, sir? Yeah. So if you go by color, then definitely with the color we can match. But the Vibgyor is the color of 6 key. The Vibgyor is not from the metaphysical physical thing. That is from the spiritual point of view. सर डिस्टेंस हीलिंग कैसे होती है सर? Distance... मैंने किया है, एक लड़की का ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था 9 दिन से, तो मैंने उसका हाथ मांगा और हाथ का फोटो पे सिर्फ मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट कर दी मोबाइल से, और वो फोटो उसे सेंड कर दिया। दूसरे दिन उसका कॉल आया कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई करके। गुड। तो किस तरह से हो गए सर? किसी भी जस्ट एनर्जी मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्टेंस हीलिंग के लिए कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। वी ऑल कैन सेंड आवर वेव्स, बट टू सेंड द वेव वी नीड टू हैव सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड। ओके, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर इन बीटा स्टेट। ओके, हमारे ब्रेन वेव्स अभी मे बी 20-30 डिपेंडिंग, सबके ऊपर डिपेंड करता है। देन द ब्रेन वेव्स विल कम डाउन इन अल्फा स्टेट, देन थीटा स्टेट and then delta state, like that. So जब आपका brain waves कम होता जा रहा है, then we can send your brain waves beyond the space, beyond the time, so that we can reach to the meditation and we can send. We don't need any media actually. Generally WhatsApp के through we can see, we can send, we can take the picture, we can do the treatment on that, or sometime if you are in very deep meditative state, say your brain waves per minute is 2, 3, 5, 6 like that in theta or delta state, then you don't need anything, just you can send through your mudra, through anything. So this is just the energy transfer, we can say. Sir, I think he just he did the treatment on palm and usko photo bhej diya, to did she apply the color or something like that? No. That's what. आपने क्या किया किशोर जी? कलर ट्रीटमेंट किया सर, स्पाइनल कॉर्ड को सिलेक्ट कर दिया ब्लू कलर। नहीं, आपने ट्रीटमेंट कैसे किया? उनका हाथ का फोटो मंगाया? हाथ का फोटो मंगाया, उनका हाथ का फोटो मंगाया? हाँ, एंग साइड पे, फिर मैंने स्पाइनल कॉर्ड पे ब्लू कलर लगा के दोनों हाथ पे, और वही भेज दिया। So it is just a normal treatment, this is not the distance healing. फिर आपने मोबाइल पे आपने करके भेज दिया? हाँ सर। फिर उन्होंने अपने हाथ पे लगाया था? नहीं, हाथ पे नहीं लगाया, उन्होंने कहा था हाथ पे लगाना, मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। Then this is distance healing. You very high level of distance healing actually. Yeah. So that's I'm telling you. So actually this was a meditative state he was in, which he was not aware of. Yes, that's I'm telling you. Na, you don't need any actually media. Okay, I did a lot of things when I did like that. I did a lot of things. So right now I don't do all these things, but we can do. For what did you do this treatment for? I missed. Sorry. So for high menorrhagia, high bleeding. Okay. So, but then this is taking his energy, no? This is definitely. Is it advisable to do for many patients? I don't advise. See, but this is what I also felt. Yes, he's in this age. He wants to do experiment. I also did experiment. Okay, right now I'm not doing. So he wants to see whether it works or not, like that. He's doing experiments. Okay. क्या जी? त्रिशूल जी, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, लेकिन आपने मेडिटेशन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नहीं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं अभी। मॉर्निंग में 3 बजे मेडिटेशन करता हूं। ओके। 3 बजे उठ के फॉलो कर रहा हूं। 3 बजे उठ के कर। हाँ, तो काम करना शुरू हो गया है। Good. Sir, he does not believe in God only, he does believe in energy. Yeah, that God is energy. God is energy. We are also energy. Yes. We are not body. Yeah. Body is also energy.
Energy. Body is physical energy, then there is metaphysical energy. So everything, world is also energy, nothing else. Everything is energy, yes sir. अच्छा सर, पोस्ट कोरोना केसेस में ब्लड रिपोर्ट में अभी इन्फेक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव हो गया है ब्लड रिपोर्ट. क्या इन्फेक्शन शो कर रहा है? एक तो ESR बढ़ा हुआ आ रहा है, और मेरे को रिपोर्ट याद नहीं है उनकी. ESR याद है कि बढ़ा हुआ आया है. सी वो मेडिसिन CRP भी बढ़ा हुआ होगा. CRP राइट CRP भी बढ़ा हुआ. वो मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग? नहीं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं. अच्छा, मेडिसिन नहीं लिया तो इट इज इजियर टू ट्रीट. मेडिसिन नहीं लिया है तो, और आयुर्वेदिक कुछ लेके अपने आप को ठीक किया, वही काढ़े पी के एंड ऑल दैट. एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया है. 14-15 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है. गुड. तो चला जाएगा, वो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, ठीक है. लाइट डाइट पे रहने बोलिए, और एक्चुअली वी नीड एडवांस ट्रीटमेंट. ओके, अभी टी लिम्फोसाइट्स, एक्चुअली इम्यून सिस्टम में जाएंगे तो वी नीड टू वर्क ऑन टी लिम्फोसाइट्स. Okay, but again we in constitution we can harmonize, we can work on the liver energy, and if you harmonize the constitution then everything will go away. Okay sir. And deep level, if you go in advanced level, then there are a lot of treatment Gabaji is also doing, but actually we need to work on T lymphocyte if you want to fight with these COVID infections. Okay. Simple thymus correspondence point. Yes. We have treatment. We started from correspondence till advanced treatment. Gabaji has shared everything knowledge on this. Yeah. So how can we work? If you have the knowledge of triagen, you can go and reach to the triagen. If you have knowledge of basic correspondence, you can stimulate the basic correspondence. So these are simple treatment we can do. Sir, I would like to thank Gabaji. He was a real help. Yes. I was wrong at making constitution. Constitution मेरी गलत बन रही थी. But he helped me out. Good. और एक ही बारी में sir, it actually I was really confused. मगर सर ने एक ही बारी में मेरी हेल्प कर दी. Good. और अभी मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम थी. He had bleeding stools. और मेरी कॉन्स्टिट्यूशन गलत ही थी. That is why I was not getting effect. Yes. It had been at least more than 5 to 6 days. And I was all confused. क्योंकि अभी तक वो काम कर रही थी. And then he talked to him and he told it's a cross-linked constitution. मुझे नहीं समझ में आया how did it change to cross-link from a simple constitution to a cross-linked constitution. But he asked me to do this. अभी मैंने उनका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है. But still he said the next day he said मैं ठीक था. Good. And I was actually amazed. Yes. कैसे हुआ? अभी मेरे को और कराना है. I have to ask him to do ultrasound and CBC also. Yes. As per his suggestion. But I really want to thank him. Good. लेकिन I'm sure कि by with time मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या गलती की थी. अभी नहीं समझ में आ रहा. With practice you learn. मैंने गलत किया था. That is why मेरा effect नहीं आ रहा था. Yes. But now maybe over time being I'll know what I have done wrong. Yes. Actually मैं immunity minus ले रही थी and he said it's immunity plus. He talked to him and he said it's immunity plus. So I had to go through. मेरे को ग्रुप में भी सबने पूछा कि why, because his short term memory is not so good, but then he said no, his short term memory is good. Then I realized yes, his long term memory is weak. I understood that. Yes, that's right. उनकी long term memory कम है and his short term memory is extremely good. Yes. So that's where he pointed me out कि तुम इसको balance करो दो को and it will harmonize itself. Yes. अभी मुझे extra कुछ भी नहीं जाना पड़ा and I had to thank him personally. And I thought this group से it's the best chance to do that. Good. And thank you sir too. कि आपकी वजह से I'm with this group. Thank you. Very good. Thank you. We have to learn with our practice and with discussion. Okay. Yes. And I'm really happy that everyone is helping each other, and Gabaji is doing a really great help to all of you. Because when he readily helped me. I was like, बिल्कुल I was out. मुझे समझ नहीं आ रहा था. I was very upset with his condition. So he said, don't worry. In fact, let me also. It's good that you gave me an opportunity to help you, but I had also reached Dr. Ajay after searching so many teachers. Then I found satisfaction over with him. Then I have stayed with him for the last 6 years. I'm with him. Oh, thank you, sir. I mean,
I'm sure I'll also improve like this with all Yes, the yes, all yes, you yes. definitely. Another year or two, you will be also like me. Don't worry. Oh, thank you, sir. That's a good blessing. Thank you very much. Thank you, You have Gabaji. reached the right place. And you all know how Gabaji found me? No, we don't know that, but all I know is that I'm in a good group. That's all. It just through a blog. When I in 2012 or 11 I was started to write few blogs. Then he followed me through blog only. Then I stopped because I was not able to give time. So I stopped writing blog. Now again I have started again. Because at that time I had learnt 60 from 2 teachers at Delhi, and whenever I used to ask them any advice to treat a patient, they will say, "Okay, you refer the patient to me." Okay. I used to feel very helpless and very bad. The teacher, instead of helping me, asking me to refer the patient to them. So then I was searching on the internet. Then I found his blog. Here's the right person who's sharing his knowledge without any inhibition and with an open mind. Yes, sir, I agree. His blogs are very, very, very informative. Then I talked to him through first Facebook. Then I got his number. Then I talked to him on the phone. He gave me advice, even though I was not a student, and in 1, 2 or 3 cases. Then I said, "No, sir, we want to learn from you." Then 2 people more joined, one Amandeep and one Sanjay Kinkar from Pune. We all compelled him to teach us. He had me say, "I know, don't I?" No, so we said, "No, you have to spare time for us." So finally he agreed, and then at that time I used to take class in the night from 10:30. I remember. That too, you used to talk only in Calcutta, sir. It's really great, because it's true that we don't really find very helpful teachers. But I was really amazed at his help, and also you for helping me out. I'm very happy that you people are doing really great job, and your people are helping in your society. That is our aim, that we should help the society. Without your help, we can't do it, sir. And that's why I'm So we are gaining confidence by the day. Yes. With the Yes, help. that's how we just know कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं. The main problem is no one points out कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं. Yes. So we never learn. Yeah, कि हमें समझ में नहीं आता. Yes. Before that I was doing coldness constitution. He was fine. He gave me good results. But इस बारी पिछली बार भी यही हुआ था, and this time too. I thought he had to go for medicine then. And then he just उसी दिन एक दिन ही he took medicine, and next day he said I'm perfectly fine. और रात को मैंने इनको apply कर दिया, and he said next day I'm fine. कुछ नहीं हुआ. That means his constitution is changing, and you have to be very careful right now, because once there was symmetrical constitution, right now it is cross-linked constitution. That means his constitution may settle to earlier one or to different one, like that. So this is not stable; it is unstable constitution. So you have to be very careful right now. No, sir. I think after 6, 7 sessions, because there is some bleeding inside, I asked her to check the platelet levels also. Yes. Because yes, sir. I was confused. Sir, platelet level से कैसे help मिलेगा, sir? If it's either बड़ा No. If the platelets level are low, then there can be bleeding in the gut area, which can come in the stools. Yes. That we can check. Okay. So ultrasound and platelet level, the 2 tests I advise, so as to know whether there's any bleeding inside, etc. or not. So that we can work on the platelets to improve their levels and to improve their count, etc. Yeah, then that treatment will be different. Okay, sir. वो अभी as soon as I get both of these tests, I will send you the reports, and please guide me further. No, you can just talk to me. There's no need of sharing the report. You can only tell me. Okay, sir. Thank you, sir. So one question I have: once we make the constitution like of a person, are the chances that the constitution can change in the next, like when they come? No. Like once suppose we make a constitution, for example, if it's a unit coolness constitution, so will this constitution be throughout the life, or the chances as per to the disease there are chances of changing the constitution? No, there is chances. It's not throughout the life, but I'm saying no means just you did the treatment and the next day constitution will change, not like that. See, a patient is coming after a few months, again you have to check the constitution. So that means every time there can be change in the constitution. Yeah. See, in next visit, say if the patient is coming after 6 months or 1 year, then it can change, because with the change of emotion, change of some event in the life, some change in the place,
If they are changing their place, then it can change. It can change. Okay, so it's not fixed, like No, some no, things no, are no, like no. defaultedly fixed. No, no, So, no, but no, no. constitution is No, no. okay. So something. So It I is. thought, sir, once we make the constitution, it will like, sir, what I feel basically, I'm Aha wind. So, but Aha wind right throughout. I feel still I'm 50 plus, but I feel it's Aha wind. But there are chances that it might change. Yes, 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 yes. See, with our treatment, constitution will not change. We are only harmonizing the energy. We are bringing the energy within the margin of norm. But with some experience and some events in our life, our constitution might change. Okay. See, suddenly there is some incidents and there is some fear or some sadness, then the dominant energy may change and the whole constitution may change. Or if there is some... So, but the body has the intelligence to heal itself. If we come out of that by itself, then we don't need any treatment. See, why we suffer from disease? In the 6th key because lecture, we are emotionally disturbed. No, there is, if there is rigidity on your constitution on the energy level, and if there is rigidity on your mind level, then because of rigidity, the energy is not able to come to the margin of norm. Okay. Say for a certain period of time, you are very much stressed because of anything, okay? And some energy is becoming more dominant, say fear, sadness, anger, or anything. But if your body is harmonized and there is no rigidity on your mental level, then that energy will again come back to the normal range. But so that means that way we can heal. But if we are rigid, then it won't be. No, we have to take the treatment. Then you have to take the help of someone. This is the way we are helping the patient. Okay. Right. So that means if we are homo in nature, if anyone is homo in nature, the chances of falling sick is high. Yeah, if there is rigidity, then because they are not ready to change. Yes. Right. See, because of certain one very clear vision, sir. Today I got it. Yeah. I used to say all these things in constitution lecture, but I can understand that this is very vast topic and there are few things we miss out. That's why we need discussion like that. So I'll share my personal experience. I just got a doubt, sir. For type 1, we'll say is a creative constitution, and a person can have either type 1 or type 2. But when there is a creative process going on in the constitution, there is a degenerative process also going on, no? What do you mean by creative and degenerative? Wind is creating like cell reform, like cell division in every cycle. For 21 days, there is a cell reproduction. See. I think you are talking about the subjugation. Anti-creation, anti-creation creation cycle. See, we have shifted from 5 key to 6 key. Yeah. 6 key is based on axial relationship. Yeah. So why, this is again the lecture why professor shifted from 5 key to 6 key. 6 key is more harmonized, and our body is not, body doesn't work on the principle of subjugation, anti-subjugation. One organ is not going to subjugate or anti-subjugate any organ. Okay. Our cell, all 50 trillion cells are in connection with each other, they are in a harmony state. If you are healthy, then each cell are communicating with each other. Okay. And our body works on the principle of harmonization, not on the principle of subjugation and anti-subjugation. Yeah, understood, sir. Okay, so this theory we cannot follow. So, but when we go for a hypothyroid patient, the symptoms that accomplishing are like lack of memory, and the hair fall. All this, deficiency we take as a constitution is causing all these phenomena. No. See. Is it disturbing the? See. First, we have to understand physiology. Yeah. Then we have to understand pathology. Yeah. Okay. Then in the same way, first we have to learn what is the harmonization principle. On what principle this physiology is working. Then if there is some problem in the body, then that is the pathology. Yeah. So you cannot explain pathology and physiology in a different way. First, we have to understand the energy works work with the help of physiology. It will help to function our body. So the function is based on subjugation, anti-subjugation, or harmonization principle. Okay. Okay. Try to understand. Then that means his body is working on the principle of harmonization only.
Okay. First, we have So to all the understand. side effects of a disease are a harmonizing process. No. See, again, yeah, right. So this is again very different thought process. That side effect of disease not. What is disease? What do you understand disease? Don't the modern science used to say in ease means if anything problem in the ease is a disease, right? Yeah. The body is not an ease. So disease, what do you think? The disease is a problem or it is an harmonization principle? What do you think? It is a very important question. Try to understand. Yeah. What do you think? Disease So is a it's a problem? harmonization actually. No, sir. So I it's think harmonization. no. I think both it is harmonizing and degeneration. No, both. See, degeneration doesn't come in one day. Try to understand. Yeah. It comes in a long run. Okay. So the symptoms which our body used to give primary symptoms. Yeah, is actually a defense mechanism. If you see any symptoms, now if we suppress the symptoms, then body goes into the chronic state. Sometime maybe because of our lifestyle or because of modern science treatments, anything. So if you understand the physiology, then you will understand the symptoms are not your problem. If pain, fever, all these acute symptoms are actually helping you. Okay. A fever we can say is a primary defense mechanism, sir. But when you come for knee pain, when initial knee pain, and I'm telling you, any symptoms, any acute cause, acute symptom is body is telling you. Body is very intelligent. Body is telling you there is some problem. You need to fix it. But if you ignore it, then it will go into the chronic state. One day your kidney cannot fail. One day your heart cannot fail. One day you will not get the degeneration of that of knee joint. Yeah. Because now I was searching through that flatulence sphincter, and one of the primary symptom of what you call polycystic ovary is flatulence. It's given as. How can you find a polycystic sin? See, all the symptoms, if you understand the physiology, all the symptoms starts from your gut only. Yeah. See, this body is physical level, on the physical level, right? Physical body, right? Yeah. So what we need for this physical body? Food and air, you can say. This food we need and air we need, these things we need, food, water and all these things, right? Yeah. So if you are taking any wrong thing in this body, that is going to decide. Okay. So that's why I'm telling you, we have to understand the physiology. Okay. So see, in my 6th class also I am explaining all these things, but actually this is lot of the health science is not a small science, so we need to discuss all these things, and we have to understand all these things. Yeah, gut is our second brain. Yes, sir, gut is our second brain. So all the flatulence, if you understand, then we will connect lot of diseases with the liver, small intestine, and gut. Gut in the sense LI? No, gut is whole digestive tube. Yeah, okay. Stomach. Not AHA humidity. Mouth to anus. AHA humidity. Yes. Okay. Yeah, boil is the king, as we teach. Yes. Okay, sir. Rupali ji was sharing something. Yes, sir. My own experience about how the constitution changes when I got my constitution made from you first time. It was wind, hotness, humidity constitution. And 3 months later, it's now shifted. 4 months later, it's now shifted to humidity constitution, humidity constitution. Yes. That was cross-link at that time, no? Yes, sir. It was cross-link. Yes, sir. In this way, constitution used to change. So it's all learning process. If you practice, then only you will learn. You have to see the patient. You have to find the constitution, and in the group, see, many people have discussed that we are not practicing, but we want to practice. So in the group, people are sharing the constitution, history sheet, and you people are practicing. Practice is only the way you can master it. Yes, we Shrika ji has written that, we have to listen to the body only. We actually don't listen, that's why we are suffering.
See, as per the triagen, if you try to understand from the triagen point of view, then if an acute condition is hetero, right? And chronic condition is homo. So in acute condition, what should we advise? In acute condition is hetero, so we should give homo or hetero? Rest. Homo. Rest. We should give homo, na? Yeah. And in chronic condition it is homo, so we should give hetero, sir. Hetero. But Homo, what? homo. No, in homo condition, in chronic condition is homo condition. In that, okay, hetero. We have to give hetero. But what we used to do in chronic condition, bedridden, patient is bedridden. What generally doctor advise? You have to take rest. And in acute condition, what we used to do? If you have loose motion fever, we take a pill and we go to medicine and go to work. Yeah, we'll go to the work. So in hetero condition, we are taking hetero. In homo condition, we are taking homo. So what we are going to do with our body? Are we harmonizing our body? Not really, sir. So if you have loose motion, what people used to do? Now everyone knows that you have to take Metrogyl, you have to take O2. You all people know the medicine. They are taking medicine, and that taking the 1 dose, 2 dose. They don't know how to complete the dose of antibiotics. So if you have loose motion, that means body is saying that take rest. Something is wrong with your gut. So stop eating. Stop eating. Yes. सर अगर पेशेंट सुनते नहीं है, दे देते हमने गोली खा ली. Yes. So that's why we need to educate. Why people are suffering? People are suffering because of ignorance. They don't know what to do. So they're just not ready to listen. Yeah, see, our job, our karma is to inform them. I do. Most of the time I say, mat karo, don't take, just give time. Yeah. But they are just not ready. They are so scared कि हमने डॉक्टर से बात कर ली, उसने बोला ये वाली गोली खा लो, हमने खा ली. Yes. So very good. खा ली तो अब तुम मुझे क्यों फोन करके बता रहे हो? Sir, if I inform the patient, they will follow. Otherwise, I'll say you just don't come to me. नहीं सर, बहुत सारे सर गावा जी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन many patients do that. They just tell me कि हमको वो हमें नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है डॉक्टर पास जाओ, फिर मेरे पास आ गए भैया, डॉक्टर से खा लो. Sometimes people will understand slowly and gradually. They will understand. People have understood that and they are followed by whatever I have said. Yes, some people do, sir, but some people तो बहुत irritating. In future, I am going to take this kind of discussion for common people. Means in future I am planning to start a discussion to educate people. Let them understand what is the cause of the disease. So then only they will able to understand and follow everything. Yes, sir. That's a very good. Yeah. I believe yes, that's a very good initiative. Yeah, people should. I think. Educated. We need to educate them. Yes, and yes, I believe that if they will listen from someone learned like you, they will actually understand. Yes. Thendu sir is the reason behind why we are asking them to not to take medicine or maybe just wait a while. Yes. I think that's a very good initiative, sir. Yes, you should please do it. Yeah, I will do. Let me finish the pathophysiology videos. That is the tough job I have. After that, I will be free. Then I will do all these things. Thendu sir is saying he is taking weekly live discussion every Thursday with a group of 6,500 members. Wonderful. Very good. Huge. Very good. Huge number. Sir, can we also join that? What is the timing? Yeah, it is actually in Sri Lankan language and it is for the closed group of 6,500 members. Wonderful. So I will do the English version of it live and I will inform you guys. Okay, right, sir. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. We will also get an idea how to do. Yes, of course. Yes, Surekha ji is also doing a lot of talks. Yes. Very good. I will request all of you to develop your skills and do all these kind of things. And nowadays we need to educate the society about all these things. Sir, I've started from my family itself. My daughter-in-law, especially, she's sitting next to me. She's hearing. She was eating her food
at late hours because her simple answer is मुझे भूख ही नहीं लगती. Then I discussed and you said it's liver deficiency. So I explained her, I said if you are not going to take your meals at the right time, don't expect that you will get healed. Yes. You have to change your habit, and now she is following slowly and steadily. I cannot push her very hard, but she is changing, sir. Yeah, we need to educate. You're sitting next to me only. Very good, very good. I have finished my dinner. I finished my meeting at 5:30. Then I prepared my dinner. I finished my dinner, and just before starting the class, I finished my dinner. So me too. I also finished. Yes. I tried to finish by 7. Yes. Very good, very good. हेलो सर. हाँ जी संजय जी बोलिए. मैं एक केस का मैंने लास्ट मीटिंग में बोल दिया था. हाँ जी. कि टेस्टिमोनी में भेज रहा हूँ कि सबको भी अच्छा लगे. मेरे पास एक 14 इयर्स का लड़का था. वो हाइपर एक्टिविटी था, किसी को भी मारता था, उनको फिक्स आती थी. मैंने एक 1 मंथ पहले बोल दिया था आप लोगों को. तो मैंने टेस्टिमोनियल उसके बारे में बता रहा हूँ. और फर्स्ट टाइम मुझको लगा कि ये वर्टिकल एक्सिस पे विंड हीट हॉटनेस एक्सेसिव है, क्योंकि वो लड़के को तो पूछ के तो वो आंसर करेक्ट नहीं देगा. तो हाइपर है बोले तो विंड प्लस है, और बुखार कभी कभी आता है, बार बार आता है तो आहा प्लस है, आहा हीट है. और लीडरशिप क्वालिटीज ऐसा वो कहाँ भी कैसा भी जा सकता है, क्या भी कर सकता है, ऐसा था वो. तो मैंने आहा हीट एक्सेसिव ऐसा वर्टिकल एक्सिस पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढा और मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. तो टैबलेट चालू है पहले से ही, लॉन्सोकॉस्टेट और लिवरपिल 500 mg, मतलब उनको फिट्स भी आते थे. ओके. तो इस ट्रीटमेंट से मैंने आहा विंड सिडेशन और आहा ड्राइनेज स्टोन और आहा हीट सिडेशन से उसको जो कोई मतलब उनकी ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड हुई थी 2 months पहले, तो उनको अभी पता चला और वो रोना चालू किया उन्होंने स्टार्ट. उनको इमोशन कुछ पता नहीं था. किसी को मार दिया तो उनको लगता है, कुछ भी नहीं लगता था उनको. किसी को भी मारता था, कुछ भी करता था, किसी के ऊपर गाड़ी चलाता था, ऐसा उसको कुछ मतलब फीलिंग नहीं आती थी. तो ये ट्रीटमेंट से उनको आंखों में पानी आना स्टार्ट हुआ. इतना दुख होने लगा. उनकी ग्रैंड मदर जाके 2 months हुई थी बैक का. तो उनको समझ में आया कि सब लोग मरने वाले हैं, जितने बूढ़े लोग हैं. अभी मेरी मम्मी भी जाएगी और मेरा ग्रैंडफादर भी जाएगा, ऐसा वो सोच के मम्मी के पास बैठा रहता था. अभी पहले क्या करता था, मम्मी के पास नहीं बैठता था, टीवी देखता था, किसी को भी मारता था, चलते समय मारता था, कुछ भी करता था, उनको कुछ पता नहीं था. लेकिन अभी उसके मम्मी के पास बैठता है और आप मेरे पास से मत जाओ ऐसा, और रोने लगता है. और वह ग्रैंड मदर गई, मेरी आई गई, ऐसा बोल के कर रहा था. तो इतना दुखी हुआ कि वो रोने लगा. सब उनके घर के सब लोग, बाहर आजू बाजू के लोग भी बोलने लगे कौन सा ट्रीटमेंट करके लाइए, वो लड़का रो रहा है. और वो सब लोग देखने लगे कि इसका आवाज कहाँ गया, मतलब वो मारता है. इसलिए सब लोग अपने बच्चों को नहीं छोड़ते थे बाहर, घर के बाहर, वो डरते रहते थे. तो मैंने ट्रीटमेंट देने के पास उसका वो मारना मिलना सब कुछ बंद हुआ. और वो इतना रोने लगा कि क्या करूं, मुझे भी समझ में नहीं आया. तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कि मैं क्या करूं. तो मैं यूनिट में गया. वो मैंने ट्रीटमेंट 8 days किया था, मतलब 2 weeks किया था. उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूनिट लेवल पे, वर्टिकल एक्सिस पे था कि एक्सेसिव ड्राइनेस यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मैंने. और उसमें मैंने क्योंकि प्लस आंखों में पानी ज्यादा आ रहा था, बार बार होता था वो एक्चुअली. तो मैंने ट्रीटमेंट दिया. ट्रीटमेंट मैंने ये दिया कि ह्यूमिडिटी सिडेशन, टोन हीट एंड ड्राइनेस सिडेशन. इस प्रकार मैंने यूनिट लेवल पे ट्रीटमेंट दिया. तो अभी ये वो लड़का वो स्टडी कर रहा है, रोना कम हुआ है, अभी वो सब कुछ देख रहा है, पढ़ रहा है. और मेरे से किए उन्होंने, मेरे साथ बातचीत करता है, सबके साथ बातचीत करता है. कभी वो स्माइलिंग नहीं करता था. वंडरफुल. मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा है कि मैं हजारों पेशेंट देखे तो भी इतना मुझको ब्यूटीफुल है. और मुझे मतलब क्या लगता है माइंड में कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो इतना अभी पावरफुल. और घर वाले बोलते हैं कि वो अभी खेलना चाहिए,
तो अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया। वो मैच्योरिटी लड़के जैसा अभी वो कर रहा है, तो उसको मैं क्या करूँ। उसको एक्सपेक्टेशन बढ़ गया अभी कि ये ट्रीटमेंट से ये खेलना चाहिए सर, अभी वो बाहर जाना चाहिए। अभी वो एक सिंसियर लड़के जैसा 14 इयर्स का है, और मुझे लग रहा है कि अभी मैं क्या करूं। अभी वही ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट की रखी है। मैं बोला धीरे धीरे हो जाएगा। रोना बिना बंद किया है, मम्मी से सब कुछ मोबाइल यूज कर रहा है, स्टडी कर रहा है, टीवी देखना बंद किया है। अभी क्या करे सर इनको, अब मैं पूछ रहा हूँ अभी क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सी ये देखिए क्या होता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड देन हम लोगों को डिसाइड करना है कि कब हमें यूनिट पे काम करना है, कब हमें इंडिविजुअल पे काम करना है। क्योंकि जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेशेंट हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट आपको फिर चेंज करना पड़ सकता है, कभी यूनिट कभी इंडिविजुअल, लाइक दैट। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी गुड। अब आप उनको हॉटनेस टोन करो। हॉटनेस अगर उनका ब्रेन लेवल पे हार्मोनाइज करेंगे तो वो और ज्यादा हार्मोनाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर बताइएगा कैसे ओके करना है। हाँ ओके सर, क्योंकि मेरे 10-12 सेटिंग। हाँ बोलिए बोलिए सर, जैसे जो ऑटिस्टिक चाइल्ड रहते हैं, वो लोग एनी टाइम यूनिट कोल्डनेस रहता है या चेंज भी होता है? नहीं, जनरली यूनिट कोल्डनेस तो जनरल डोमिनेंट रहेगा जनरली सर। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट है वो एक्चुअली पहले आई ऑटिस्टिक चाइल्ड है, पहले आई कांटेक्ट नहीं करती थी, कोई रिस्पांस नहीं करती थी, बट अभी आई कांटेक्ट भी कर रही है, उसको कुछ भी पूछ रहे हैं उसका रिस्पांस कर रही है, हमिंग करने लग गई है, एंड 3-4 वर्ड्स भी बोलने लग गई है, और अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो क्या मैं अब शिफ्ट हो जाऊं इंडिविजुअल पे? हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने कलर से ही पूरा ट्रीटमेंट कर रही हूँ। हाँ नहीं, आप इंडिविजुअल पे कर सकते हैं आप। इंडिविजुअल पे शिफ्ट होना चाहिए ना? हाँ हेलो सर। हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए संजय जी। और एक मैं सेकंड टेस्टिमोनियल बताऊंगा। हेलो सर। हाँ जी। जो वर्टिब्रा 11 और 12 में जो ब्रेक हुआ था एक्सीडेंट केस में, और दोनों लेग पैराप्लीजिया हुआ था, मैंने 2 मंथ बैक आपको बताया हाँ था। जी हमने डिस्कस किया था, और हम डिस्कस किया था। उस केस का मैं टेस्टिमोनियल बताऊंगा। अभी उनके लेग में पावर आए हैं, बहुत अच्छा। और वो बहुत बेटर हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर यूनिट लेवल पे ट्रीटमेंट है वो मैं कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आ रहा है सर। मैंने पूरा बॉडी एक्यूप्रेशर बंद किया है। गुड। और अभी मैं दिन में 3 टाइम्स ट्रीटमेंट देता हूँ, तो उससे भी बेटर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। मतलब ये 2 केसेस मेरे लिए पूरा आह्वान थे कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ये लड़के के लिए मैं अभी हॉटनेस टोन और ह्यूमिडिटी सिडेशन और हीट टोन हो सकता है। तो ये मैं करूंगा सर। नहीं बहुत अच्छा। नहीं, आप उनका एक्सेसिव सिडेशन से स्टार्ट किया था ना आप उनका? नहीं उसको, यस सर। तो सिडेशन से स्टार्ट किया था ना, एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन लिए थे ना, ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सिडेशन से स्टार्ट, सिडेशन से स्टार्ट करिएगा उसमें। यस सर। ह्यूमिडिटी सिडे ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, कोल्डनेस। नहीं सर, ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, हीट आता है सर। हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, हीट आता है सर, ऐसा आता है। नहीं हमें यूनिट ड्राइनेस एक्सेसिव ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था पहला मेरा। सो इस केस में आपने ह्यूमिडिटी, हीट एंड ड्राइनेस लिया, राइट? ओहो यस सर। हाँ, तो अभी हमें ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, कोल्डनेस लीजिए। यस सर। मतलब हॉटनेस टोन करके ह्यूमिडिटी, सिडेशन और हीट टोन। नहीं, ये एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सो हमारा ट्रीटमेंट सिडेशन से स्टार्ट होगा। सो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया था, ह्यूमिडिटी, हीट एंड ड्राइनेस लिया था। अभी आप ह्यूमिडिटी, हॉटनेस एंड कोल्डनेस लीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, उसके बाद बताइएगा फिर कैसा। ओके सर। एंड ग्रुप में एक क्वेश्चन है राहुल जी का, शायद फिब्राइड मसल्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग यूट्रस के मसल्स में जाके भी काम कर सकते हैं। एंड जैसी जी का क्वेश्चन है कि उसमें डीजनरेशन एज ए डिजीज, एज ए डीजनरेशन में होमो को रेंट करेंगे।
बल्कि यूटेरस के लिए भी मसल्स में काम करना पड़ेगा सर? बल्कि यूटेरस के लिए नहीं, फिब्रॉइड के लिए। अच्छा, और बल्कि के लिए उसमें ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ओवरऑल नहीं तो लोअर कोर में। हाँ, नहीं तो लोअर कोर। ठीक। सो आज के लिए यहाँ क्लोज करें हम लोग डिस्कशन आज का। Yes, sir. Smile, thanks, sir. Smile, thanks. Smile night, sir. Smile night. Smile night, sir. Smile night, sir. Smile, thanks. Smile night, sir.